नमस्ते सभी को। और मैं बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो भी लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब लाइव। बहुत ही अच्छा अवसर है। बहुत खुशी के साथ मैं आज का ये वेबिनार शुरू कर रही हूँ। इस वेबिनार की पहले एजेंडा सेट करते हैं। आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि ये वेबिनार हमने क्यों रखा है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का जो प्रथम क्रिएटिविटी क्लब प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था जुलाई महीने में, जिसका नाम है मैसेज टू द मून। जैसा कि हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं, बच्चों को कम्युनिटीज में जहां हम काम करते हैं, कुछ चैलेंजेस भेजे गए, जिस चैलेंजेस के अंतर्गत बच्चों को उसका एक क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आना था और उस सोल्यूशन को हमारे तक साझा करना था, हम तक पहुंचाना था एक माध्यम के थ्रू। और जो सबमिशंस हमें आए हैं, जो क्रिएटिव्स हमें आए हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आए हैं। कोई हमें ड्राइंग्स के फॉर्म में आए हैं, कुछ स्केचेस के फॉर्म में आए हैं और कुछ मॉडल्स के फॉर्म में आए हैं। अगस्त महीने तक हमारा जो रीच था इस चैलेंजेस का, इतनी अच्छे तरीके से इसको वेलकम किया गया कम्युनिटी में। बच्चों ने बहुत उत्साहित होकर इसमें पार्टिसिपेट किया। 10,000 से ऊपर गांव ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कुछ 45,000 से भी ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े, बच्चे और यूथ इसमें जुड़े। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस ओपन कंपटीशन में, इस चैलेंजिंग कंपटीशन को लॉन्च करने में जो हमें भागीदारी दी, वो ल्यूनार्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने हमारे सहभागी बने और उनके सहयोग से हमने ये कंपटीशन लॉन्च किया था। तो जो हमें इतने सारे सबमिशंस आए हैं, उस सबमिशंस में से 29,000 सबमिशंस ऐसे थे जिनको ग्रेड करने के बाद माना गया कि वो बहुत उम्दा सबमिशंस थे, और ये लुनाक के साथ हमने शेयर किया। ये भी बताना बहुत जरूरी है कि जो ये 29,000 का आंकड़ा है, ये सबसे बड़ा आंकड़ा था जो प्रथम ने रीच किया बाकी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये उपलब्धि बताने में, और ये वेबिनार आगे लेके जाएंगे जब हम, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे गेस्ट कौन है। हमारे गेस्ट एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं, लेकिन वो नासा में काम करते हैं। उनका इंट्रोडक्शन शायद मैं अपने शब्दों में नहीं बता पाऊं, इतनी बड़ी हस्ती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे बढ़ते हुए मैं हमारे आज की गेस्ट, जो कि डॉक्टर मधुलिका है, सीनियर एडवाइजर नासा की, जिनको हम डॉक्टर लिका के नाम से भी पुकारते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपने शब्दों में अपना परिचय दें। डॉक्टर लिका, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। And this is the 5-minute introduction. First of all, Shubh Prabhat, because it's morning. I can see the sunrise behind me, and I know it is Shubha evening in your case. So I'm going to, I had to write this up. How can you describe, an entire life that is 60 plus in 5 minutes? So if I don't write it down, I'm just going to ramble. Bas just bakte rahenge. So I'm going to read you something that I wrote for you. So imagine a young girl, just like some of you here today, curious and full of questions. She gazed at the stars, pondering the mysteries of the universe. Her philosopher father, much like a wise elder, sharing stories by a campfire, didn't dismiss her questions, but ignited her scientific curiosity. He posed a question that still echoes through time. He said, "Look at a circle. Can you tell me where the beginning or the end is?" क्या इस सर्कल, चक्र को देखकर तुम बता सकते हो इसका शुरुआत और अंत कहाँ? It's hard to do that. This young girl embarked on a journey from the heart of India into the land of opportunity, America. That's how you know it, right? Or the United States of America. Armed with dreams, education, and the values instilled by her family and culture, she ventured into the unknown, the land of Anjan. You don't know. Can you guess who she is?
Batao to ye kaun hai? I'm sure you know. It is, of course, me. It was scary and exciting, the journey, you know. Darwana or Ramanchak, ek saath, to tell you the truth. It was very challenging, bahut kathin. I had to adapt to new languages, cultures, and schools, and had to overcome obstacles like crazy. But I knew that my passion for understanding the universe's deepest secrets would guide me. All of you look up at night sky, don't you? Isn't it just incredible? अब सभी लोग रात के आकाश की ओर देखते हैं, है ना? झाकास है ना? The shimmering lights of the stars, the floating marble ball we call the moon, just planted there, watching us. चारों तरफ जगमगाते हुए तारे, एक ठहरी हुई मार्बल बॉल, जिसे हम चांद कहते हैं, जो दूर से हमें देखते रहते हैं. Even crazier, as you know, is the fact that we are exploring the moon, Chand, now. Chandrayaan-3 landed on the moon on 23rd of August, 2023. The rover is exploring it right now. How cool is that? India and the moon. You know, हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है. It is all woven into its fables, folklore, philosophy, and calendar. Think of all our pujas. They are on the lunar calendar. It's a land where poets like Rabindranath Tagore have penned verses that resonate with the very essence of celestial bodies, the jagmagate hue tare. ठाकुर जो खुद कलकत्ता शहर से हैं, उनके रचना में मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं. He planted a seed that would grow into my deep philosophical connection to language and culture. And so this young immigrant girl, me that is, you know, carried the rich cultural memories of India in her heart, went to lead NASA teams, opened up a new field of science called Heliophysicist to study the sun and unravel the secrets of space weather. Now, you already know, I love the sun. I truly do. मुझे सूरज से प्यार है, बेहद प्यार है. हम सबकी जिंदगी सूरज की इर्द-गिर्द घूमती है, right? पर मेरी उससे कहीं ज़्यादा. I have traveled across the planet to see the eclipses of our Surya Dev in played scientific roles, led them. If you don't already know, India is also quite curious about the sun and has recently sent the Aditya L1 spacecraft to study it. Just happened this month. So all in all, I'll tell you this much. हमें अपने सपने के साथ सच्चाई से जीनी चाहिए. That is the truth. And everything becomes possible then. ख्वाब चाहे तारों पहुंचे कि सूरज को छूना कुछ भी नामुमकिन नहीं है. You can do it. But we are here to talk about the moon, our Chand Mama. So dear children, remember to stay curious and crazy as we explore the mysteries of the moon today. You too can reach for the stars or whatever celestial body you choose and unveil the wonders of the universe. After all, sometimes the most profound questions leads to the most remarkable discoveries. And I consider myself the Sun Lady, and I welcome you, Swagat, to chart unknown territories in search of your answers. That is my story.
Thank you. Thank you, Dr. Madhulika. This was very inspiring. I think मैं बच्चों के लिए इसको I want to summarize it. What Madhulika ma'am shared was, ये आपको इंस्पायर करता है कि किस तरीके से आपको क्यूरोसिटी जो उत्सुकता है उसको अगर आप फॉलो करें तो आप भी सन लेडी बन सकते हैं, बिल्कुल डॉक्टर मधुलिका की तरह। तो मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि किस तरीके की आपकी जर्नी थी, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत खुशी हो रही होगी। आगे चलते हुए हमारे वेबिनार के सेशन में कुछ सवाल जवाब भी हैं, क्योंकि हम डॉक्टर मधुलिका से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना लगभग सारा जीवन जो है इस रिसर्च में दिया है, स्टार्स की रिसर्च में, सूरज को स्टडी करते हुए। तो हम उनसे और भी जानना चाहेंगे कि वो क्या काम करते हैं और किस तरीके से इस रिसर्च को देखते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। इन सब क्वेश्चंस को हमने बच्चों से पूछा कि इस तरीके इस इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो उनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे, तो वो अपने सवाल हमसे साझा करें। और बहुत बेहतरीन सवाल आए हैं हमारे पास जिसको शॉर्टलिस्ट करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। I'll move forward and ask one by one the question that has been shared by children. So, Dr. Madhulika, are you ready for the answers? I am as ready as I ever will be. आप पूछिए, and मैं थोड़ी हिंदी में बोलूंगी but mostly अंग्रेजी में। तो सबसे पहला सवाल, the first question that comes is, I can already sense कि ये question कितनी उत्सुकता के साथ पूछा गया है. So the first question starts with, the Earth is moving, the other planets are also moving. So when a spacecraft travels from Earth to reach to another body and another celestial body, how we ensure that reaches, at the designated place that we want to. इसको आई वांट टू ट्रांसलेट इट हिंदी कि पृथ्वी और अन्य पिंड, जो खगोलीय पिंड हमारे आकाश में है, वो अपनी एक कक्ष में घूमते हैं, लेकिन हम कैसे ये जानते हैं कि वो अपना रास्ता निर्धारित करें जबकि सारी बॉडीज जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो आपस में घूम रही हैं? ओवर टू यू मधुलिका मैम। It's a very good question, but a complicated one. जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, उन लोग शायद थोड़ा सा समझेंगे. So the point is that this seems like a mystery, but it's not a mystery. If you study physics, then from the knowledge of physics, you can arrive at this answer. So specification of the trajectories, हम चांद में जाना है, चांद के साउथ पोल में लैंड करना है. These are specific trajectories. These are based on Newton's laws of motion, basic laws of motion, Newton's law of gravitation. पैर में एप्पल है, एप्पल नीचे गिरते हैं, that's gravity, right? So you have to overcome gravity of Earth in order to send us, rocket to space. That's the first thing. Once the rocket engine stops, you have to know where that object is placed in time. Once you know its position, you know its velocity, you can then carry out all of these equations using Newton's laws, using Kepler's laws of motion around the eclipses, the Kaksha that you described, and you can determine the trajectory. So there is a lot of, it's a short question. The answers are huge, and depending on where you want to go, it can be very complicated mathematical computational model we create. But you know that we have already done it. We can precisely pinpoint where we want to go. We want to go to Mars, which is not moving in the same orbit as us. So we have to figure out there are only certain times in a year or year and a half when Mars is close enough to us. So that's why we have windows during launch so that we can launch the spacecraft. Thank you, Dr. Madhulika.
तो जैसा मधुलिका मैम ने बताया कि इसको स्टडी करके और रिसर्च में जाके ये समझ आता है कि कौन सा समय ठीक है और कौन सा वक्त ठीक है कि अगर हमें मार्स पे जाना है तो मार्स पे लैंड करने के लिए। तो आई बिलीव कि इसके पीछे बहुत सारा स्टडी जाता है और बहुत उसको समझने के लिए कि हम कौन सा रिसर्च और कौन सा लॉन्च किस समय कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dr. Lika, next question talks about your project. You mentioned that you are a sun lady, and the children are very curious to understand that sun is also a star. Do you research about the other stars also? Are they really as small as they appear? And do you think in future there would be any life possible, on star, or maybe they can anybody, a human being can go to star? I will translate this question in Hindi also. बच्चों ने सवाल पूछा है कि मलिका मैम का जो एक प्रोजेक्ट है बहुत डियर है उनको, वो है सूर्य पे आधारित है, लिविंग विद द स्टार्स। बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या वो और स्टार्स के ऊपर भी कोई शोध कर रही हैं, कोई रिसर्च कर रही हैं, और क्या तारे जैसे हमें यहाँ से बहुत छोटे नजर आते हैं असल में उतने ही छोटे हैं, और क्या जीवन संभव हो पाएगा फ्यूचर में? ये सवाल है। ओवर टू यू मैम। Thank you. Sun is the only star that we can see in daylight. Surya, हम दिन पे अभी देखते हैं. I'm looking at the sun right now. It's up here. And the sun is so bright in our sky that it obliterates all the other stars. So we have to wait for Suryasta, sunset, when the sky gets dark, for all those stars to appear back and twinkle. They were always there. They are there now. We just can't see them because the sun is so bright. Now, why does the sun look so big? Because it's so close to us. All the other stars are very, very, very far away. It takes light, and light is the fastest moving entity. I don't know what to call it. It's life itself. It takes 8 minutes for light to come from sun to earth. And our closest stars are 4 million light years away. So you can imagine how far they are. And so the size of an object that we look at depends on our distance to that object. And that's why sun looks so big. Sun is a very ordinary, run-of-the-mill, average star. There are many, 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 many stars that are much bigger and many that are smaller. So both kinds. We are somewhere in the middle. And of course, in my early days, मैं जब research करती थी, I would try to compare what we learn from the sun with other stars. We call it solar stellar comparison, because we get a lot more detailed knowledge of a star, its birth, its middle-age life right now, ultimately its death, very well because of these details. And then we take those information, we apply it to many of the stars that are like the sun. And these are the ways, Chandrasekhar, again, an eminent astrophysicist, Nobel laureate, discovered the stellar structure. We didn't leave our planet. We stayed here at home or at work and figured all of those equations. And so I don't know if there was another part to that question, Anju? Yeah. So do you think that in future we'll be able to live on stars? Was the another part? Very interesting question. If I could do astrology or read tea leaves, I would tell you what future would look like.
sitting here today, that is not going to be anytime soon, not in our lifetime or yours, not unless we have technology that we all of a sudden invent, or technology that falls into our hand. I cannot imagine that today. All right. थैंक्स अ लॉट। तो मधुलिका मैम ने बताया कि किस तरीके से वो स्टडी करते हैं कि जो स्टार है वो कैसे जन्म लेता है, कैसे वो अपनी मिडिल एज तक पहुंचता है, और जैसे यूनिवर्स में हर चीज है जो जन्म लेती है और उसका एक अंत होता है, तो कैसे स्टार का अंत होता है। और किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो स्टार्स हमें दिखते हैं नेकेड आई से, वो डिपेंड करता है कि वो हमें कितने बड़े दिख रहे हैं उसके डिस्टेंस पे। तो ये उन्होंने बताया। और जो अगला पार्ट था सवाल का कि क्या हम कभी स्टार तक पहुंच पाएंगे, क्या वहां पे जीवन की संभावना है। तो टेक्नोलॉजी रोज बढ़ रही है, आप देखते हैं बहुत नई चीजें जो हैं हमारे साथ इंट्रोड्यूस होती हैं, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी का हमारा स्टेटस है उस हिसाब से इसको कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि हम कभी स्टार पे जीवन यापन कर पाएंगे। थैंक यू। इसी के साथ आई थिंक आई शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू your journey, Madhulika ma'am. You reached to a very esteemed position at NASA. You're working for, you're working to, you're researching on stars and other celestial objects. So, what is your inspiration? What motivated you to reach here and to become a scientist? What step would you recommend to a aspiring scientist? इसी को हिंदी में बताना चाहूँ कि मधुलिका मैम को यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा कहाँ से मिली, वो यहाँ तक कैसे पहुंची हैं, और अगर उनके जैसे ही कोई वैज्ञानिक जो हमें शायद आज देख भी रहे हों, वो एक ऐसा ही वैज्ञानिक बनना चाहें, तो वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ओवर टू यू मधुलिका मैम। It's a great question, and I don't know that I have a special upbringing, other than my father was always encouraging in answering my questions instead of saying that's not a good question, because most people don't know the answers to these questions. So very early on, I think my grandmother, who I was very close to, passed away, and I was told she turned into a star in the sky. And I got hooked on watching the night sky and dreaming about everything that you students are asking me about. I was 5 or 6 years old. As far as I can go, that's kind of the beginning. I was mesmerized. And I was asking my father questions like, where do we come from? What happens to us when we die? Or ant, as you say beautifully in Hindi. And my father, tried to best not to shut me up. And as I told you in my journey, he drew a circle and showed me, that young child, that there is no beginning or end of some questions. It's very circular, it's metaphysical, it's philosophical. And I couldn't see all the reason what he was trying to teach me, but as I grew up, I did actually. And it just stuck with me. And we played games, we read a lot, going to the planetarium, watching dinosaurs, watching the night sky in planetarium. The world around me inspired me. I mean, it inspires all of us if we take the time. And that's kind of what inspired me to be a scientist. As a grown-up girl, I loved cosmology, which is not just looking at one star, but looking at the entire universe to answer the questions of, beginning and end. I still have that deep quest, but I didn't follow cosmology to my graduate school, but I loved connecting science to philosophy and spirituality. I strongly believe science and philosophy can't be separated. Why are we here? Where do we go? What our role is?
they're interconnected. And so it took me to the quest of understanding something more deeply, which I could. थैंक यू मैम। मैम का जवाब काफी प्रेरणावर्धक है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बचपन में बहुत सारे सवाल पूछा करती थी कि ये कैसे होता है और वो कैसे होता है, क्या होता है जब कोई चीज अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। और उनके आसपास जो लोग थे, उनके अभिभावक थे, उन्होंने कभी उन्हें सवाल अच्छा है या बुरा या सवाल ना पूछे ऐसी प्रेरणा नहीं दी। तो इससे ये प्रेरणा भी मिलती है कि जो हमारे बच्चे जो हमें अभी देख रहे हैं, उनको जितने सवाल आपके दिमाग में आते हैं, जो भी चीजें आपको आश्चर्यचकित लगती हैं, आप कभी भी शर्माए ना और बेझिझक जितने सवाल आप पूछ सकते हैं और जितने आंसर्स आप अपनी क्यूरोसिटी से कलेक्ट कर सकते हैं, आपको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फर्स्ट say the question in English. When transmitting commands from ISRO to the Pragyan rover, for example, in Chandrayaan Mission 3, is the communication conducted through a standard network similar to what we use on Earth? Or if it's different, how it is different? Is it a specialized network? Ma'am, हिंदी में इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट करना चाहूंगी कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को इसरो जो कमांड देता है, उसमें किस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? हम जो धरती पे इस्तेमाल करते हैं, क्या ये नेटवर्क वैसा ही है या कुछ स्पेशल है? ओवर टू यू मैम। It's not special. It is the same kind of tools and techniques we use, radio waves for communication. And, walkie-talkie, you see people, right, communicating from one end to another, sometimes on trains, long distance trains, sometimes when we are taking care of disaster areas, we communicate from one end to another. So that's kind of the tools. But of course, the tools are much more sophisticated and robust because we are communicating from the moon, from the south pole of the moon. So the spacecraft is equipped with radio transmitters and they receive it. It's a 2-band radio transmitter. You can receive and give information. Spacecraft sends data through specific radio frequencies so that there is less interference. You don't want to use the same radio frequency that we use, say, for our television or for our radio. So those are things you do. There are special centers where this takes place. There is something called Tracking Command and Network for ISRO. It's ISTRAC. There is the Indian Deep Space Network that's kind of communicates since the launch from Sriharikota. So these are well-known technology and tools, but still these are challenges because you're far away. So you need big radio receivers. And, there are interferences that happen on the moon because moon doesn't have an atmosphere. So something happens on the sun and moon feels it, and that can cause interference in communication. To sum up ma'am's answer, पहला जो आंसर यही निकल कर आता है कि यस, जो नेटवर्क यूज किया जाता है वो स्पेशल है और जो नेटवर्क जहां से हैंडल किया जाता है वो भी एक स्पेशल डेजिग्नेटेड प्लेस है। रेडियो ट्रांसमिटर्स के थ्रू ये जो भी बातचीत है वो की जाती है और ये अलग है जो हम डेली में नेटवर्क यूज करते हैं उससे डेफिनेटली। बहुत सारे इंटरफेरेंस और बाधाओं के बारे में उन्होंने बात की, जो आई थिंक मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में हम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि जो बाधाएं अभी हैं वो चुनौतियां कम हो पाएंगी। राइट, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, considering the extreme high temperature of the sun, is it safe for a spaceship or a spacecraft to be in the close proximity, considering that, now we are talking about that a spacecraft would maybe, there would be a research on sun and a spacecraft may go near to it to understand a lot of mysteries.
इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मेरा कहना ये है कि सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, अगर हम जैसे हमने मून के साथ ऐसा शोध किया, वैसा ही अगर हम सन के साथ करते हैं तो उसके नजदीक जाना कितना सुरक्षित है? इसका जवाब मधुलिका मैम देंगी। Great question. It's not only that we are doing it. NASA has a mission called Parker Solar Probe. That is the last mission I worked on. It's closest to my heart. That is actually going to the sun. Now, what do I mean by going to the sun? It is not going to land on the sun because sun is a star. It's not a solid rocky body. But this spacecraft is going to go within 10 million miles of the sun in its outer atmosphere, measuring what the corona, the outer atmosphere of the sun, what you're seeing behind me, that's where that spacecraft is going. In December of 2024, it will get closest to the sun. And we now have technology in hand that can keep the spacecraft cool, that can keep the instruments under the shade of the spacecraft. And it's moving very fast. And the corona is very hot, but it's also the actual heat content is low because there are very few particles. So we are able to do that. And we launched this mission in 2018. So it's survived this long and has given us incredible data that we have never seen before. And that's going to change some of the knowledge of solar physics as we know it today. थैंक यू। मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से 2018 में एक सन से रिलेटेड एक्सपीडिशन शुरू किया गया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो एक सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज एनहांस करने में सन के रिसर्च में उनको हेल्प मिला। इसके अलावा जैसा हम समझते हैं कि हम शायद ये मानते हैं कि हम मून का एक्सपीडिशन कर रहे हैं तो हम मून पे लैंड कर रहे हैं, और वैसा सन पे लैंड करना पॉसिबल है कि नहीं? ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है, कंसिडरिंग कि कितना ज्यादा तापमान रहता है, बट जो उसकी आउटर लेयर है उसके एक सिरे तक पहुंचना और कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करना जिससे कि स्पेसक्राफ्ट तापमान उसका कंट्रोल किया जा सके, और वो जो रिसर्च है वो या फिर जो हम जानना चाहते हैं वो ठीक से जान पाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था उनका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Ma'am, I want to ask you that what is the probability of human being, able to establish a sustainable presence in the space in future, considering that we have, now excelled, we have quite a good knowledge about what is happening in space. So what do you think? मैम से मैंने सवाल पूछा कि क्या भविष्य में मनुष्य अंतरिक्ष पर घर बना पाएंगे, इसकी क्या संभावना है? I think this question has a more high probability answer. I definitely think that we would be able to use the moon to begin with, our closest satellite for resources, if we find that there are the right kind of resources and we can excavate it. I think we have the tools and technology for that, but we have to come together as a world to do that carefully. And it could solve maybe some of our problems with power and other things. So I think that is a more doable aspect of going to the next body. Going further than moon requires a lot more. So if there is a political will and resources invested in the area, I think we could make great strides. We could. Sustainable, anywhere else, we want to. But I don't know how far away that is. There are a lot of still difficulties in space. Space is harsh.
the sun produces radiation that's harsh. And we don't know still how to mitigate around that. राइट सो मैम का जवाब यही था कि जिस तरह से अभी हम चल रहे हैं, जिस तरह से हम ऐसे एक्सपेडिशन कर रहे हैं स्पेस से रिलेटेड, हो सकता है कि आगे जीवन जो है संभव हो, लेकिन ये बता पाना कि कब और कितना वो सस्टेनेबल होगा, ये कह पाना अभी के लिए मुश्किल है। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, बहुत सारे जवाब हमें मिले। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे जो सवाल पूछना चाहते थे उसके जवाब भी उनको मिल रहे हैं। मैं इसी के साथ ये भी एक झलकी दिखाना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह के सबमिशंस हमें मिले थे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बात करी कि बहुत सारे सबमिशंस आए और सबमिशंस काफी उम्दा थे। तो ये देखना कि किस तरह के सबमिशंस थे बहुत अच्छा होगा। तो अभी एक वीडियो चलेगी जिसमें आप जो सबमिशंस हमें मिले थे उसकी एक झलकी देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी gorgeous, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। ये बहुत छोटी सी झलकी थी आप सभी को दिखाने के लिए कि किस तरह के सबमिशंस हमें मिले और कितना मुश्किल रहा होगा हमारे लिए इसको शॉर्टलिस्ट करना, ये भी आप समझ सकते हैं। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर लिका को कि सिंस उन्होंने बहुत सारी बात करी, अपने काम के बारे में बताया, एक प्रोजेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग जिसके ऊपर वो काम कर रही है, लिविंग विद द स्टार्स। इट वुड बी ग्रेट अगर वो हमें बता पाए कि वो क्या है ये प्रोजेक्ट और क्या है जिसमें वो उन्होंने वो काम कर रही हैं। So Dr. Lika, I would like to request you, you share briefly about your project Living with the Stars, because children are very curious to know that what this project is about and what are your experiences. I will do that shortly. And I have a request of you, because I am working from home, internet bandwidth is always an issue. And so when I present, movies and all, it just takes up a lot of room. So I would like to stop my personal video so that I have more bandwidth when I'm presenting the PowerPoint. Okay? Yeah, sure. Okay. And let me bring this up. Bear with me. Can you see? Yes. Perfect. So we've been talking about aspirations and dreams, and what do you dream of? Really? What indeed? Let's see. And so, it's our dreams, it's our inspiration, ideas that essentially make the future we live in. Imagine where we were 50 years ago and what we are able to do today. Dreams are very, very important. And so, do you dream of the moon? You have drawn these beautiful pictures that I just saw. It's absolutely amazing. Our Chand Mama, that marble ball that floats and watches
over us. The moon is very, very cool. It has led to so many creative ideas, poetry, song, pictures, philosophy, you name it. We are so lucky to have the moon in our life. Our very own natural satellite. कोई बनाया नहीं है, भगवान ने बनाया है शायद. We don't know. We don't know. You know, we landed on the moon in 1969 on the Apollo 11 rocket, and I was probably about your age at that time. It was just unbelievable. One giant leap for mankind, but it was only a small step for a human being, Neil Armstrong. And now you know that India is exploring the lunar surface with the Pragyan rover that went to the moon on board the Chandrayaan-3 and finding all kinds of stuff. It is a very exciting time for researchers and the world in India. And maybe, you know, one of you can be the next human to set foot on the moon. That is entirely possible. You have to think it, will it, and do it, and you can do it. What is my dream? It's always been to touch the stars, and my favorite star, of course, you know by now, the sun. The reason we live, love, exist, all of it, it's because the sun is there. The sun is truly amazing in every way. Societal consequences of solar variability is immense. We have a permanent space station with presence of humans in Earth orbit, and human will eventually travel beyond that, you know, back to the moon and beyond. Also, solar variability can affect human spaceflight, satellite operations, power grids, GPS navigation, emergency radio communications that I talked about on the moon to communicate, air travel, financial services, and even terrestrial climate. Everything. Understanding this variability is really, really important for our way of life today. It is no longer just a curiosity to study the sun. It is a necessity. Now, sun attracted me and falling prey to its immense gravity, that's one way of putting it. It's very big. I made a career out of stars to find my answers. I study the sun, not just for its beauty and complexity and the vast amount of data it provides, but also because of its connectedness to everything and every space in the solar system. The solar corona that you see, which is the outer atmosphere of the sun, we can see with naked eyes during a total solar eclipse, eventually covers everything in the solar system. And yes, just stop to think that we live in the outer atmosphere of a star. From this newfound inspiration, I understood how learning about our sun would help continue our existence into the future. Now, how is understanding the sun going to help our future, you may ask, right? Well, if you don't understand the sun, one who birthed us in the first place, because we wouldn't be here without the sun, then the sun might get angry and take its gift away in a single moment. I'm just joking. So you want to know how? The answer is solar storm. Yes, like on Earth, we have hurricanes and snowstorms. The sun also produces storms, except they consist of charged particles and magnetic field. A solar storm is a kind of disturbance on the sun, which can go outward across the interplanetary medium, affecting the entire solar system, including Earth,
Earth's magnetosphere and is the very cause of space weather. This is what creates space weather. Coronal mass ejections are another kind of solar storm, which consist of billion tons of superheated charged particles like electrons, protons, shooting off the surface of the sun and hurtling 93 million miles toward Earth. When they hit Earth's magnetic field, they trigger geomagnetic storms, which can cause all the problems that I talked to you about. These storms are caused by regions of intense magnetic energy. Now, the most beautiful part of a solar wind, solar storm, are the auroras on Earth. When the solar wind gets past Earth's magnetic field, it runs into our atmosphere, the atmosphere that protects us, because we don't feel the charged particles. Otherwise, we would be charged all the time because these are charged particles. As the protons and electrons from the solar wind hit the particles in the Earth's atmosphere, they release energy. And this is what causes the northern and southern lights. They are just spectacular. But solar winds are dangerous to us now more than ever. And you can probably already begin to guess. Not only, all the living stuff, even our technology is very much dependent on the sun's winds. Long time ago, technology was too primitive to be disturbed by space weather. But today, we rely on countless devices that suffer when there is a solar storm. Think of all of the material you use that requires an electric current, even right now. Computers, I'm giving a talk on a computer, television, cell phones. Solar weather events have been occurring for a long time, but didn't affect us. But now it is affecting our technology, and voltage fluctuations become quite commonplace during these times. So I understood the importance of space weather and collaborated with fellow scientists to form an entirely new branch of physics called Heliophysics, study of the sun and its connectedness. And you know what I call myself? A Heliophysicist, a woman who practices heliophysics. I just made this up. So what is heliophysics? Heliophysics is just the study of the physical domain defined by the sun, the heliosphere, just like astrophysics is the study of the physical domain defined by stars. And this physical domain, of course, includes the sun, the solar system, and stretches out to the very end into interstellar medium. In principle, heliophysics, influences everything under the sun. We have to understand the sun. If we don't, then we might go back to the Stone Age. But this is not just about going back to the past, right? It is also about our path towards the future. Where are we headed as a species? I've always envisioned humans becoming a spacefaring multi-planet species. Is that even possible? We are going to travel regularly to outer space now, and we are doing so. We are truly on our way to becoming a spacefaring civilization. And do you know one of the most deadly things that can hinder our progress up there? It's radiation from solar wind. So we have to understand and predict space weather right now to make this vision come true. Do you want to settle on Mars? There's a lot of talk about it, a lot of plans. And some people sure do, and you might be amongst them. But it is impossible to live there now. Why? It is because Mars gets its atmosphere ruthlessly stripped away by solar storms. That's what's happening, and you're exposed to greater radiation. Well, Mars doesn't have something that Earth does, which protects us from the solar storms. Earth's magnetic field is much stronger than Mars. That protects us
from the most of the harmful solar radiation that kind of gets blown past our magnetosphere. As you are seeing, those are magnetic field lines, basically. And that's how we have been able to create a sustainable, neutral atmosphere in which we live. But we want to become an interplanetary species, don't we? We need to find solutions to make other planets habitable. And this is where we are entering a new era of interplanetary space weather, not just space weather for Earth, interplanetary. This is possible because we have got the sun surrounded. And missions like STEREO and SDO, Solar Dynamics Observatory, sees the whole sun. It sees the front side of the sun and far side of the sun. That is a marvel entirely of its own. And NASA now has sent probes to far corners of the solar system, from Mercury to Pluto and beyond. And our Voyager spacecrafts have left the solar system altogether. Now, to protect all of these robotic assets and the human astronauts who will inevitably follow them, we must learn to predict space weather anywhere, anytime, throughout the solar system. That's what we do in the program. This is Living with a Star is one of my sort of proudest achievements. It was a program really to understand space weather better and really study the influence of sun on our life and society. Solar Dynamics Observatory, launched in 2010, was the centerpiece of this program. And we've not seen the sun with this kind of clarity ever before and continuously. SDO connects us personally to the deepest mysteries, from the warmth we feel on our skin when we go out and look at outside on a sunny day, or to the distant reaches of the cosmos. And currently, NASA's Heliophysics fleet provides data crucial to space weather forecasting. So missions like Parker Solar Probe and European Space Agency's Solar Orbiter missions are essential new components of the heliophysics interplanetary space weather. And now to this, we are going to add Aditya L1 mission from India. These are many of the missions that were launched under the Living with a Star program. And I think we understand the relationship between the sun and earth better today. And I feel that I know and understand our sun far better and can predict some of its whims and fancies. There's a lot more to learn. So you have a lot more work to do in future. So both India and the US are on the same path to understanding the sun. The Aditya L1 mission is India's maiden, the first mission to observe the sun. How cool is that? Now, there's something very strange happening on the sun. The outer atmosphere of the sun is pretty hot, obviously. But what is not so obvious is that it is hotter than the actual surface of the sun. The temperature of the outer surface the corona can reach about 1 million degrees or more, while the sun's surface itself just stays at around 6,000 degrees Celsius. This is very difficult to figure out because the more we move away from fire, the cooler it gets. That's common sense. We all know that. But sun is not behaving in the common sense way. And so this is one of the very important missions on Aditya L1 visible emission line coronagraph. Now, with all the different sets of instruments on Aditya L1 and Parker Solar Probe and Solar Orbiter, we are going to go deeper into answering the question, why is the corona so hot?
Down to my last two slides. So this is kind of an oxymoron, kind of silly. Bevakuf jaise question. So I've summarized it by saying that despite being millions of degrees hot, the sun is still pretty cool. I'm sure you'd agree with me. And Anjum will translate this for me. And then finally, what's different between all of you and the sun? The sun doesn't need to go to college. It already has 27 million degrees. Thank you very much. Thank you, Madhulika ma'am. That was extensive knowledge about your project, and I'm sure that viewers have to come back and look at the video again using the same link to know more about it. जैसा कि हमने देखा कि मधुलिका मैम ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमसे शेयर करी, एंड आई एम श्योर कि जितना आसान ये उनके लिए रहा होगा उतना आसान हमारे लिए नहीं है इसे समझना। हम जो लिंक जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं अभी, उस लिंक पे दोबारा आके जब चाहें इसको दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं अपनी स्पीड पे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड ये बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज थी जो हमारे साथ शेयर की गई। बहुत एक्साइटिंग था देखना कि किस तरीके से सन की क्यूरोसिटी उनकी बचपन में जो थी उसको आगे ले जाते हुए उन्होंने उसके ऊपर शोध किया और बहुत सारी जानकारी उसके बारे में इकट्ठा की और उसको समझा। और इंटेंशन यही है उनकी और उनके जैसे और शोधकर्ता की, रिसर्चर की, कि जितनी जानकारी हम सन और या ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जान पाए वो जाने, और ऐसी ही क्यूरोसिटी वो बच्चों में भी आई एम श्योर इंस्पायर करना चाहती हैं कि आप लोग दृढ़ निश्चय से जिस चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, शर्माए ना और बेझिझक आप उसके लिए काम करें। Thanks a lot again, Madhulika ma'am. It was very interesting to know about your project. इसी के साथ मैं अपना सेशन आगे लेते हुए जाऊंगी। I'll move the session forward and enough of talking. सीरियसली मैं बहुत बोल चुकी हूँ। अब मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो बच्चे एक एक करके अपने सवाल मैम से पूछें और मैम उनका जवाब दें। सो मधुलिका मैम विल गो फॉरवर्ड एंड चिल्ड्रन विल आस्क सम क्वेश्चन दैट दे हैव एंड आई वुड वांट यू टू आंसर द क्वेश्चंस। इसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो सबसे पहली पार्टिसिपेंट हैं, काफी यंग है, उस पार्टिसिपेंट का नाम है रुकैया, उड़ीसा से जुड़े हैं हमारे साथ। रुकैया, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि खगोल वैज्ञानिक मतलब क्या है, वे क्या काम करते हैं? Madhulika ma'am, Rukaya want to ask that who is a space scientist and what do they do? ये वैज्ञानिक जो है बस हरे जैसे वैज्ञानिक जैसे काम करते हैं। So space scientists actually work on missions that are in space because we can't get that data from our Prithvi, from the ground. And then we take that data and we try to put those data into knowledge we already have to get new knowledge. It is sometimes tedious because you have to work very hard. Creating missions takes a long time, sometimes 10, 20 years. And then you have to actually take the information we get from the mission and advance science knowledge. Sometimes we have ideas why something happens. Can we prove it? So space scientists can work on the moon, can work on the sun, can work on stars far, far away, can work on asteroids, which sometimes come towards us and cause real problem, can work on comets, can work on Earth, because we take data from space to see how everything on planet Earth is changing. The moisture level, the monsoons, the hurricanes, the snows, these are all part of what we scientists do, that we call space scientists, who are using all of this information. You have to translate, Anju. Thank you. रुकैया का सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग था और मैम का जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है
कि स्पेस साइंटिस्ट बेसिकली स्पेस को पढ़ते हैं, समझते हैं कि स्पेस में धरती पे क्या चीज कैसे होती है और क्यों होती है। हमें ऑलरेडी बहुत नॉलेज है कि स्पेस में क्या चीजें कैसे होती हैं, कैसे दिन रात होते हैं, कैसे धरती में तापमान का बदलाव होता है, कैसे मॉनसून आता है, इस तरह की चीजें। और स्पेस साइंटिस्ट के जो शोध है, उनका कार्य इस चीज को समझने में और हेल्प करता है, नॉलेज एनहांस करने में करता है, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एनहांस करने में मदद करता है। ये स्पेस साइंटिस्ट का काम है, एंड आई एम श्योर रुकैया विल बी द स्पेस साइंटिस्ट वन डे, और उनको तब खुद समझ आएगा कि कैसे स्पेस साइंटिस्ट काम करते हैं। थैंक यू, लेट्स गो अहेड। हम अगला सवाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ से गुलशन जुड़े हैं हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं आगे। नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं खगोल वैज्ञानिक कैसे बन सकता हूँ? All right, ma'am, very inspired by you. Children want to ask that how, if they wish, how they can become a space scientist, maybe like you. Could you please answer that? It's easy. You can do it. School में जाना पड़ेगा, math, physics. There are some important subjects you have to take. Computer science, maybe do some projects with your teacher, science projects. And that's going through high school. And today, because we live in the age of internet, any question you want to ask me or anybody, you can ask the question in Google, or you can ask the question in many different platforms. So having access to internet, computers, you don't have to have it at home. If you have it at school, at library, it's going to be very important. And I would say, keep your questions alive, try to find answers for them. But it's not just science and math. You'll also be able to be good with language because you have to express yourself. You have to learn computer science because that's going to make whatever you're doing a little bit faster. So everything is within reach and you can do it. Thank you. To summarize मैम्स आंसर, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा अगर आप एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई करनी होगी, और उसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस और मैथ्स और फिजिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको बहुत बेहतरीन अपने आप को प्रूव करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, जिज्ञासा आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए, और आप सवाल पूछते रहें। गूगल एक ऐसा माध्यम है, या इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसपे आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो एक वो जिज्ञासा रखना और सवाल पूछते रहना, और जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी मास्टरी होना। उसके अलावा लैंग्वेज भी मैम ने एक बहुत तवज्जो दिया कि लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। कैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश तो हमें आती है बेशक, लेकिन जब हम इतने बड़े पैमाने पे काम करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने शोध के बारे में किसी को बताएंगे, तो हमें लैंग्वेज की भी नॉलेज एक्स्ट्रा होनी चाहिए, सो दैट कि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाए। तो ये था मैम का जवाब। थैंक्स अ लॉट मैम। We'll move to take the next question. Again, the next question is from Chhattisgarh. Praful will ask his question. Praful? Yes, ma'am. नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर मैं इस क्षेत्र में जाना चाहूँ तो मुझे किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए मैम? All right. Thank you, Praful. Ma'am, this question is somehow related to the another one. So he wants to ask that if you want to study or go deeper in this particular field, what exactly the kind of degree or education he can obtain, to become a space scientist or become a researcher like you? So in India, given everything that is going on, right? So much attention to space, going to moon, going to Mars, maybe there'll be Gaganayan, Indian astronauts soon in space. I do not know all of the variety of programs that exist in India, and Anjum and others will be able to give you some of those lists. But there is no shortcut
to studying and learning and taking all the right classes, right? So being completely grounded in physics, in math, in reading, writing, is absolutely important, right? And as I mentioned before, computer science is something you have to learn today. Otherwise, you can't navigate the world. When you are in college, then you can choose what is it you want to study. You can choose physics, you can choose chemistry, you can be a space chemist, you can choose biology, you can be an astrobiologist and looking for evidence of life in the universe. So you, as you go along, you have to develop that sense of what questions are you trying to answer. It's going to be on you, but the path is laid. And when you are in school, you have to go through all of this. And I would say, I said language, I would say drawing is very important. These are soft skills. Singing is very important. Dancing is very important. We are human beings. We are creative people. And sometimes when we only look at, math and science, the world becomes very narrow. So I'm so delighted to see this program, which brought you in through your drawing, through your imagination. Thanks a lot. It's an honor for us. Praful, to answer your question, मैम ने जिस तरीके से बताया कि आपको कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। आप स्कूल में ऐसा बनने के लिए इन सब सब्जेक्ट से महारत हासिल कर सकते हैं। कॉलेज में जब आप जाएं तो साइंस, केमिस्ट्री, आपके पास एक ओपन फील्ड होगी। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट चूज करके उसके अंदर विस्तार से जाना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैम ने बोली, जो मैंने भी पहली बार सुनी, कि क्रिएटिविटी जो है उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैम ने ये भी मेंशन किया कि एक ड्राइंग जैसे एस्पेक्ट है, या जो आपने क्रिएटिव हमारे साथ शेयर किया, उस तरह की चीजें जो है, ये नहीं कि आप साइंटिस्ट बनने के लिए आप मैथ और कंप्यूटर साइंस के ऊपर तो बहुत ज्यादा महारत हासिल करें, लेकिन आपने क्रिएटिविटी जैसी, आप अगर गाना गाते हैं, आप अगर कुछ अच्छा लिखते हैं, उसको पीछे छोड़ें। तो इन सब चीजों को आगे लेते हुए बढ़ें, और कॉलेज के समय में इस चीज पे बहुत ध्यान देना कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना स्ट्रीम चूज करना विल बी वेरी यूजफुल। इसके अलावा अगेन इंटरनेट का सहारा लिया जा सकता है ये जानने के लिए कि हम हमारे सवालों का जवाब जो है कहीं ना कहीं हम इंटरनेट से भी खोज सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। छत्तीसगढ़ से एक और पार्टिसिपेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांशु निषाद है इनका नाम, और दीपांशु अपना सवाल रखना चाहते हैं। नमस्ते मैम, मेरा सवाल यह है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है? All right, Madhulika ma'am, the children want to ask you that what advice do you have to, give to these young people, young mind, who are very passionate about space science? Everything else other than studying hard and all that I have already said. There are certain personality traits, in my life. I work in a bureaucratic world, but I try to limit the word impossible from my vocabulary. If someone comes and asks me something to do, a challenge, even Parker Solar Probe, very many people in the scientific community thought it was impossible. I don't use that word. I always try to find solutions. That is life. Maybe by the time my life ends, I wouldn't have achieved it, but I don't give up. So do not think anything is impossible. Try to focus and figure out solutions. Get out of your comfort zone. Sometimes life goes on very smoothly and we don't take risk. Sometimes it is worth taking risk. Sometimes it is good to leave home and go to a boarding school, or something that makes you uncomfortable because you are not with your family. And this is kind of tough,
but then it allows you and takes you to a different level. And finally, I would say, just take your ideas and think about it. Think about it a lot. You are a very young kid. And as you grow, this will get sort of enmeshed in you, in your personality. थैंक यू। जो हमने बातचीत करी शिक्षा से रिलेटेड, उसके एडिशन में मैम को यही कहना है कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए कितने पैशनेट हैं, और उसके लिए पैशन दिखाना, उसके लिए काम करना, इस चीज का भी ध्यान रखना कि कई बार हम अपनी सिचुएशन को देखते हुए रिस्क नहीं लेते हैं, तो कितने ओपन हैं आप रिस्क लेने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं इन एडिशन टू जो मैम ने पहले बताया उसके साथ। तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। इस क्वेश्चन के बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। काफी क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र से आर्या पूछना चाहती हैं। शी हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू शेयर। आर्या, मेरा सवाल है कि ऐसे कौन से शैक्षणिक संस्थान है जिससे हम इस क्षेत्र के बारे में और अधिक समझ सकते हैं और इससे संबंधित विषयों को पढ़ सकते हैं। now again I understand you are sort of an ideal for everybody, and all those children who are watching you right now, they want to be like you, right? So lots of questions are coming from the field asking you how they can become a person like you, or a researcher like you. So in addition to the question that have been asked earlier, the children want to ask that what are some esteemed maybe educational institutions, or if you are aware of any program that you may recommend to our children through which they can explore and understand more about this field and maybe the related courses, certification, subjects. Madhulika ma'am. So, because there are so many, I haven't made a list, but oftentimes in most countries, planetariums are a great place, where you can go. I mean, that's what I did as a child, build a planetarium in Kolkata. Think of what it was in my time versus what it is today. So having school programs that can take, or families that can take children to libraries where there is access to internet, computer, planetariums where they have a visual display of the natural world, not just, stars and galaxies, but dinosaurs and Egypt, history. Science is science. As I said, you can use space to investigate so many things, including archaeology. So I would suggest, I'm not going to suggest the kids to go Google, although many kids are very adept at it, better than I am. But all of you sort of who are putting together this event, find out all the activities. India is doing a lot of stuff, I know, but I don't have them at my fingertips. India is trying to bridge the gap between rural India and cities. And there are many clubs, many planetariums, many societies where you can find mentors in India, because, there is a rich heritage of teaching, that those are the information that needs to be passed on to the students. I am so far away. I am 12 hours away from you in America. There is incredible amount of wealth here as well. But for you young people, it might be kind of hard to find them. But I think it's an excellent question, and we should take it offline here and really give you some links, some input, so that you can explore. Thank you.
टू आंसर दिस क्वेश्चन, मैम ने किस तरीके से साझा किया कि प्लानिटेरियम या तारामंडल जैसी जगहों को एक्सप्लोर करना, किस तरीके से इनसे रिलेटेड बुक्स में भी लाइब्रेरी में पढ़ना, किस तरीके के एक्सपोजर की जरूरत है अभिभावक से। इन आवर केस वी वुड आल्सो लाइक टू सी कि हम ये स्कोप अपने प्रोग्राम के तहत कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों का जो ये एक्सपोजर है वो बढ़े। और मैम ने ये भी एम्फेसाइज किया कि किस तरीके से टीचर्स या मेंटर्स की कोई कमी नहीं है इंडिया में। कुछ ऐसे मेंटर्स से बच्चों को जोड़ना would also be very essential, and I think ये बच्चों के साथ साझा करने, बच्चों के लिए लर्निंग होने से ज्यादा ये हमारे लिए लर्निंग है, क्योंकि आई एम श्योर हम इससे कुछ ना कुछ आगे सीख के कुछ नया कर सकते हैं। इसके अलावा मैम ने मेंशन किया कि किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हो सकता है वो हमारे साथ शेयर करें, जो हम बच्चों के साथ आगे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवाकर का है, महाराष्ट्र से। दिवाकर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि एक वैज्ञानिक के रूप में इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको किसने प्रभावित किया? As I said earlier, your Hindi was more understandable. Some of the physics words in Hindi is something I'm not very familiar with because as a Vaigyanik, I studied in English. So many people, as I said, very early on, my father kind of championed my curiosity. And it's not just curiosity about the stars, it's curiosity about life itself. When you ask the question, where did we come from or where do we go when we die? These are very quintessential human questions. And my father never shut me down. I think that is a tremendous influence. My family played a very big role. And the music, I used to draw too. I used to sing. All of this together with the natural wonders of the world. I was still drawn to the sky. Some people are just like that. Not everyone is, which is absolutely okay. And going from there, it was a relatively ordinary journey of going to high school in Delhi, then going to college, then going to US to get my advanced degree. And along the way, there were many people, my advisors, my teachers, my fellow students with whom I could discuss and brainstorm. Many people. It's a journey. It's a journey of life. And I would say everyone who came in contact with me, my family, my husband, who has to put up with me every day, my children, my sisters, everyone leaves their imprint on you. We don't even know how, but that's what makes us a whole human being, and we can pursue what we pursue. Very inspirational, ma'am. To summarize ma'am's answer, मैम ने यही बताया कि किस तरीके से जिंदगी के दूसरे चरण में जाते हुए हर चरण में उनके पास एक इंस्पिरेशन था, कैसे उनके फादर ने उनकी क्यूरोसिटी को हमेशा मोटिवेट किया, किस तरीके से वो आगे बढ़ी और कॉलेज में गए। उनके मेंटर्स, जब उन्होंने ये एक रिसर्चर का ओहदा लिया तो किस तरीके से उनके कॉलीग और उनके सीनियर्स ने उनको मोटिवेट किया और उनको सपोर्ट किया। एंड आई एम श्योर ये केवल रिसर्च फील्ड में नहीं, ये हर जगह अप्लाई भी होता है कि हम अपने सराउंडिंग से ही इंस्पिरेशन लेते हैं, और वही कहानी मधुलिका मैम की भी है। तो आप अपने वर्तमान समय पे, अपने हर चरण पे, हर स्टेप पे आपको इंस्पिरेशन किसी ना किसी से मिलती है। एंड इट्स गुड टू टेक एडवाइस ऑल्सो। आप किसी को मेंटर बनाते हैं, आप उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, आप उनसे प्रेरणा लेते हैं, ये बहुत एसेंशियल है कामयाबी हासिल करने के लिए। दिस इज व्हाट मधुलिका मैम शेयर। थैंक्स अ लॉट। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। महाराष्ट्र से गौरवी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गौरवी अपना सवाल पूछें।
मेरा सवाल है कि वर्तमान वर्तमान में हेलियोफिजिक्स में I believe there is some internet issue there. हिंदी में गौरवी का सवाल है कि वर्तमान में हेलियोफिजिक्स का हमने नाम लिया और कई लोगों ने ये शब्द मेरी तरह पहली बार सुना, तो उसमें क्या चुनौतियां हैं, एंड टू ट्रांसलेट दैट टू इंग्लिश मैम, व्हाट आर सम ऑफ द current challenges or mysteries that exist in heliophysics? If we don't understand the sun well enough to be able to predict, when the next big solar storm will happen, or how fast will that solar storm travel to Earth and really affect our technologies, because satellites can go down, cell phone can stop functioning, computers go away, internet is gone, power grids can get shut down. It can cause havoc to our technological society. So we have to understand the sun and be able to create the understanding to predict. Now, why do we want to predict? Because prediction, now when you have a flood, we predict, right? Why? So that people can leave the flood zone. That is called mitigation. So with the sun and space weather, we can do mitigation. If we can predict all of these things, then if there's an astronaut doing spacewalk in space, that astronaut gets inside the space station behind a protective wall so that radiation doesn't hurt him. If you have satellites in space, then you turn off sensitive instruments so that they are not damaged, because the storm doesn't last very long, but you have to be able to weather it. There are numerous examples like this. So that is the challenge of heliophysics, to understand what the sun does, how it varies, and to translate that understanding into prediction, so that people on Earth, people who are space travelers, can take mitigating steps. All right. So हमने देखा कि किस तरीके से मैम ने बताया कि स्पेस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं किसी जानकारी के लिए सपोर्ट करते हैं। तकनीकी चुनौतियां एग्जिस्ट करती हैं, और कितना हम रिलाय कर सकते हैं उन इंफॉर्मेशन पे, कितना सटीक है वो, ये भी एक चुनौती है जो आई थिंक आगे आने वाले समय में विद टेक्नोलॉजी एंड विद मोर रिसर्च विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट सवाल लेती हूँ गुजरात से। प्रमेश पूछना चाहते हैं सवाल। प्रमेश, कैन यू क्विकली आस्क द क्वेश्चन? I think there's some internet issue at Pramesh's end. I would request Muskan to come forward and ask the question. Muskan is from Madhya Pradesh. नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन है, सूर्य और अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन करने के लिए हेलियोफिजिसिस्ट किन उपकरणों एवं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं? Translate this question for you, ma'am. Muskan wants to know that what tools and technologies basically heliophysicists use to study the sun or maybe the space weather. If you can name one or two. All the spacecrafts that we have in space and the data we get from it, computer models, artificial intelligence tools, that and just thinking about ideas, hypothesizing how to answer important science questions. Thanks a lot, ma'am. हम काफी
जल्दी पहुंच गए इतनी सारी बातचीत करते हुए, एटलीस्ट एट लास्ट अपने सेशन के एंड पे। एक क्वेश्चन और है जो विरल गुजरात से पूछेंगे, और उसके बाद हम एक और सवाल लेंगे और इस सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। विरल फ्रॉम गुजरात। नमस्ते मैम। अब मेरा सवाल ये है कि आप अंतरिक्ष में होने वाली मौसम की घटनाओं के बारे में कैसे जान पाते हैं? Okay, so to translate this question in English, how do you predict and monitor space weather events? Somehow related to our previous questions. Yes, there is a lot of observations, lot of science understanding we already have. And so we are constantly monitoring the sun with observations. And when there is a storm coming, we have enough understanding to predict it. We can see it launch. Because of the satellite observations, we can track them all the way from the sun, sometimes to Earth. We put this data in our computer model. It's not very different from meteorology, the way we start predicting Earth weather. So we utilize similar kind of approaches for space weather, for prediction. But remember, sun is 93 million miles away. It has to come a long ways, and it kind of changes form. So it is vastly more complicated than just predicting Earth weather. Thank you, ma'am. मैम ने मेंशन किया कि किस तरीके से जब हम बहुत सारी वेदर कंडीशंस अपने अर्थ पे मेजर करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, कई बार हम मौसम, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कभी हम मौसम या फिर मॉनसून के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि ये 7 तारीख को आएगा, बट वो 9 को आता है या आगे पीछे हो जाता है। इसी तरीके से जो स्पेस वेदर है उसको भी प्रिडिक्ट किया जाता है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है, कठिनाइयां ज्यादा होती हैं, सिंस जो सन है वो बहुत दूर है, लेकिन ये समहाउ आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हमने, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी हमें पता लगी, कुछ प्रेरणा हमें भी मिलती है कि हम अपने प्रोग्राम में क्या चीजें ऐड कर सकते हैं और बच्चों को किस तरीके से और डिफरेंट एक्सपोजर के साथ आगे लेके जा सकते हैं, क्या नई चीजें की जा सकती हैं। मैं चाहूंगी और सभी चाहेंगे कि जो बच्चे मैम को सुन रहे हैं, जो लोग मेरे जैसे लोग भी सुन रहे हैं, मैम उनके लिए कुछ इंस्पिरेशन वर्ड्स बोलें। और ये जो है, ये महालक्ष्मी कर्नाटका से जुड़ी हैं, जिनके सवाल के साथ ये सम अप होता है। तो मैं महालक्ष्मी को बुलाऊंगी कि वो अपना सवाल पूछें। Hi, Dr. Lika ma'am. Today my question to you is, what advice do you have for young people who are passionate in space science? So I think these are probably going to be my last words. We are coming to the end of the session, and I have given answer to a question like this in very many forms. So what can I tell you? I truly believe that we human beings have all power within us. We don't have to look externally. We can do anything and everything, and we have to believe in that. That's the internal power, and I believe Swami Kananda said this, that was his call to young people. I'd like to say, for all of you who are aspiring to be space scientists, engineers, physics, chemists, in the world of STEM, science, technology, and math, make pursuit of science and math fun. Don't do it because you have to do it and it's dull and boring. Make it fun. Play games, puzzles, hands-on activities, visits to museums, just looking at meteor showers that can happen, and you can go outside and sometimes observe it if the sky is clear. Be curious about everything in the world around you. That is all I can say. Thanks a lot. मैम के फाइनल वर्ड्स वेरी इंस्पिरेशनल। जिज्ञासा को बिल्कुल ना छोड़ें, और जो सवाल आते हैं उसको भरपूर पूछें और उसके आंसर जानने की कोशिश करें। साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस,
इन जैसे सब्जेक्ट को केवल पास होने के लिए या पढ़ने के लिए ना पढ़ें, बल्कि अपनी नॉलेज इनहैंस होने के लिए पढ़ें। और मैं कहूंगी बल्कि जो भी आप पढ़ें वो इस उद्देश्य से पढ़ें कि आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं और उसमें अपनी नॉलेज को इनहैंस करना चाहते हैं। देन डेफिनेटली वन डे you will be one of like Madhulika ma'am and become a very maybe a upcoming scientist. And that was the inspirational and final words by Madhulika ma'am. And Madhulika ma'am, I'm very thankful to you to come over to this webinar and share the kind words to all the children that are here and to immense like thousands of children who are watching you right now. It makes a lot difference. Thanks a lot. I In want the to end, thank you, Anjum, for the brilliant translation you have done of whatever I tried to say. That was amazing. As I said, I'm not very good in spoken Hindi. I'm shy, don't want to speak. I want to thank Lakshmi, dear friend of mine from way back, who pulled me into this, and all the students for your wonderful questions for me. Thank you so much. thanks a lot. In the end, it would be really great if we can take a picture with all the children and Madhulika ma'am on the screen. It will have a lasting impact on children. Can we have a picture with Madhulika ma'am with all the children? Just a minute, I'm trying it in the gallery view. सारे बच्चे प्लीज हंसें. बहुत बड़ी स्माइल. I want everybody to smile. Show your teeth. Are we ready? मैम क्या? मैम हम अपने मन से मंजुलिका मैम को कुछ सवाल पूछ सकते हैं? आप उनको बाय कह सकते हैं क्योंकि उनका बहुत समय प्रीशियस है और वो जा रही हैं. आप हमें सवाल भेज सकते हैं और हम मैम से उन सवालों के जवाब रिटर्न में ले सकते हैं. मैम मैं पूछ रहा था कि मंजुलिका मैम के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का वो स्कूल कौन से लेकर सब्जेक्ट वैज्ञानिक बनी, उससे आई थिंक दीपांशु म्यूट हो गए, बट जो सवाल वो पूछ रहे थे उसका काफी एक्सटेंसिव जवाब मैम ने दिया था कि कंप्यूटर साइंस और साइंस के सब्जेक्ट्स और मैथ्स को उन्होंने कभी पीछे नहीं छोड़ा और बहुत क्यूरियोसिटी से उसको पढ़ा और उसके अंदर बहुत डाइव डीप किया और उसके बारे में जाना. ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी बच्चे ऐसे वी करेंगे, विक्ट्री वाला, एंड विल टेक अ पिक्चर विद मैम. Yeah, we are good. Thanks a lot, Madhulika ma'am. Thanks a lot to all the children and thanks a lot to all the viewers जो हमारे साथ आज जुड़े और इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया. मैम